Hello and welcome. Now in this lecture, we are going to find Laplace transform of hyperbolic functions. Laplace transform of hyperbolic functions. So first of all, the curiosity of the students is that ये क्या होता है hyperbolic functions? ये जो है ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और इनको हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के टर्म में लिखे होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज which type of hyperbolic function is Laplace transformable, है ना. तो देखिए आपको दो तरीके के फंक्शंस का Laplace ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो. एक होता है साइन हाइपरबोलिक और यहां आप t लिखिए, दिस इज इक्वल टू समथिंग, एंड दूसरा होता है कॉस हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक कॉस ऑफ variable t. Now these two functions are called as hyperbolic sine and hyperbolic cos. So students, don't be confused because both are looks like a trigonometric function, sine and cos, but they are only looking like a trigonometric functions, but there is no connection between trigonometry and these two functions. This h definitely differentiate this function from the trigonometry. All right, so this h means it is a hyperbolic sine. And how you are define this, I'll explain. You draw the line, your variable is t. So you write the exponential function with this variable. तो आपका exponential function हो जाएगा e raised to t, right? Then it is a sine of hyperbolic, therefore put the minus sign, and you take one more exponential function with a negative exponent. मतलब इधर जो है वही इधर लेना है, सिर्फ पावर का साइन चेंज करना है, divided by 2. So this function is called as a hyperbolic sine in variable t. Now how we can define this hyperbolic cos? It is just a conjugate of this. Conjugate का मतलब जानते होंगे आप कि बीच का साइन चेंज करना है, तो ये बनेगा आपका conjugate, मतलब e to the power t plus e to the power minus t divided by 2. So these are the hyperbolic functions. और भी होते हैं जैसे कि tan hyperbolic, sec hyperbolic function, cot hyperbolic functions, but they are not Laplace transformable क्योंकि उसका exponential order वाले functions वो नहीं होते हैं. That's why we cannot find the Laplace transform of remaining hyperbolic functions. We can find only these two functions Laplace transform. Okay, now to get the Laplace transform of these two functions, we have to learn one more property, and that property is called as a very beautiful name, that is linear property or linearity of Laplace transform. Linearity of Laplace transform. What is its meaning? I will explain first of all what is this property and how this property is useful to us to find Laplace transform of those functions which are written in terms of addition and subtraction. Okay, so what is this property? So suppose I'm considering two functions f1t and f2t, which are Laplace transformable functions. So let f1t, this is a one function,
and f2t is the another function. Both are be Laplace transformable functions. That means इसका Laplace transform exist होगा. Laplace transformable functions. Alright. Now we have taken two functions, therefore now we will take two constants. So let alpha and beta be constants. You can take real numbers, any real numbers, constants. Now we have two functions, two constants. तो अब क्या करेंगे, एक कांस्टेंट एक फंक्शन को मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा टाइम्स f1t, और दूसरा कांस्टेंट दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज बीटा टाइम्स f2t. Now add these two products, so you will get another function, and we can say that the new function is a linear combination of f1 and f2. In vector calculus might be you know कि दो वेक्टर को दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो उस एडिशन को लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है. यहां पर वेक्टर के जगह हमने दो फंक्शंस लिए, उनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई किया एंड उसको हमने ऐड किया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट सर दो ही फंक्शंस लेने चाहिए, तीन लिए तो नहीं चलेगा? यस ऑफ कोर्स, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 100 आप जितने चाहे फंक्शंस ले सकते हो, उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो. दैट विल गिव यू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ functions and with constants. All right. Now the aim is how to get the Laplace transform of such expression. So apply the Laplace transform. Then what happen? If I'm applying Laplace transform on this linear combination, so alpha times f1t plus beta times f2t. Now the rule is, the linearity property rule is, it is alpha times Laplace transform of first function, separately you can write, and plus beta times Laplace transform of the second function, that is f2t. That means when you apply Laplace transform on this such an expression, then you can take the Laplace transform of each term. That means you are calculating Laplace transform term by term. And this is possible due to this property whose name is linear property of Laplace transform. If anybody asks you prove this property, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं. You just take the LHS, and you know that the definition of Laplace transform is 0 to infinity e to the power minus st. And now your function is, under this operator, is alpha f1 plus beta f2. Okay? And take the integration with respect to time t. Now, using the distribution law inside the integration sign, ये जो फंक्शन है ये अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई होगा. मतलब वी कैन राइट अल्फा टाइम्स ई टू द पावर माइनस एस टी f1 प्लस बीटा टाइम्स ई टू द पावर माइनस एस टी f2, and this is dt. Now we can use the linearity of integration. Integration हमेशा term by term integration लेता है. We know that. Therefore, now I am using the property of integration, and we can take the separate integration of each term. So alpha times e to the power minus st f1 dt plus integration 0 to infinity beta times e to the power minus st f2 dt. Now it is a whole responsibility of integration. So alpha is a constant, therefore, and it is multiplying, therefore we can take alpha
outside the integration. Therefore, we can get alpha times integration 0 to infinity e to the power minus st f1 dt plus beta times integration 0 to infinity e to the power minus st f2 dt. Now look at this first integration. This is a definition of Laplace transform of first function, that is f1t, and this is Laplace transform of second function, that is f2t. Therefore, we can write this as alpha times Laplace transform of f1 plus beta times Laplace transform of second function f2, and hence the proof. तो ये बड़े आराम से हमने प्रूव करके दिखा दिया. Now the question is, next question is, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, क्या हम उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? जैसे कि कांस्टेंट हम लेते हैं a1, फर्स्ट कांस्टेंट a1, then first function is f1, a2, then second function is f2 plus dot 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 up to an fn. So this is a linear combination of n different functions, and therefore we can find out Laplace transform term by term. ये हम term by term निकाल सकते हैं, right? What about the series? तो finite series अगर होगी, finite series मतलब जिस series में number of terms finite रहेंगे. तो मान लीजिए कि first term है a1 into x or a1 into t. Instead of x I am taking t, plus second term है a2 into t square, third term is a3 into t cube. It is a polynomial because the terms are finite, and the last term is a n t raised to n. So can we take its Laplace transform? So if you apply Laplace transform on this finite series, then you can calculate Laplace transform term by term. That means a1 Laplace transform of t, you can write this, plus a2 Laplace transform of t square, and so on. And finally, in the last term, you can write an into Laplace transform of last power, that is t raised to n. Okay, we can do this. But then now question arises, instead of finite series, if we consider infinite series, right? So just I'm considering infinite series in this way. So an, and this is t raised to n, and n is running from 1 to infinity. So this is nothing but infinite series because there are infinite terms in this series. तो क्या ये linearity की property जो हमने finite series पे अप्लाई की, टर्म बाय टर्म हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला, तो क्या सेम चीज हम इनफिनाइट सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी डू दिस? एंड द आंसर इज नो, बिग नो. हमेशा आप इनफिनाइट सीरीज का लैपलेस ट्रांसफॉर्म टर्म बाय टर्म नहीं निकाल सकते. Now the question arises again in the mind of students that why, sir, why we don't find Laplace transform of such an infinite series term by term? Okay, I will explain what is the reason. So for that, I have to give one counter example. The counter example is, suppose I am considering a function e to the power minus t square. Okay, so this exponential function is continuous because
exponential function is always continuous on this interval, and this function is bounded. Bounded means bounded in this interval. बाउंडेड का मतलब होता है कि इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप t की जगह रखते हो तो इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा. इट हैज टू बाउंड्स. जस्ट चेक दिस. व्हेन यू पुट 0 तो e टू द पावर 0 1 आएगा, एंड व्हेन यू पुट द लास्ट वैल्यू दैट इज इंफिनिटी तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होगा और उसका आंसर 0 आएगा. मतलब इस फंक्शन के सारे वैल्यूज फॉर द ये इसमें से कोई भी आप t की वैल्यू रखोगे तो उसका आंसर 0 to 1 के बीच में आएगा. तो 0 इज द लोअर बाउंड, 1 इज द अपर बाउंड, एंड सारे वैल्यूज इन बिटवीन 0 और 1 रहेंगे. जैसे साइन एंड कॉस होता है. साइन एंड कॉस बोथ आर बाउंडेड फंक्शंस क्योंकि उनके वैल्यूज कभी भी -1 और 1 के बीच में होते हैं, राइट? तो continuous as well as bounded, therefore this function e to the power minus t square is Laplace transformable function. मतलब ये हो गया है कि इसका Laplace transform exist होगा, 100% exist होगा, गारंटी exist. ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट हो रहा है इसका. लेकिन अगर आप इस फंक्शन को जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था इसको अगर आप सीरीज के फॉर्म में लिखते हो तो यू कैन राइट दिस सीरीज एज n is running from 0 to infinity, right? N is running from 0 to infinity, and you can write this as a -1 raised to n upon n factorial, and this is t raised to t square raised to n. So equivalently इसको आप सीरीज के फॉर्म में -1 raised to n upon n factorial, right, t raised to 2n लिख सकते हो, and n is running from 0 to infinity. So this is infinite series, right? अब ओरिजिनल फंक्शन का तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो रहा है. अब उसी फंक्शन को हमने सीरीज के फॉर्म में लिखा और उसका इनफिनाइट सीरीज भी हमारे सामने है. तो इस सीरीज का भी तो लैपलास ट्रांसफॉर्म उतना ही आना चाहिए जितना इसका आ जाएगा, एग्जिस्ट तो होना चाहिए. लेकिन अगर इस सीरीज का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम टर्म बाय टर्म लेते हैं, टर्म बाय टर्म मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अप्लाई करेंगे हम और इसके ऊपर टर्म बाय टर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1. तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, फर्स्ट टर्म 1 रहेगी, प्लस सेकेंड टर्म मतलब n की वैल्यू 1 लेना है. 1 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज 1, और यहाँ 1 लेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ आई थिंक -1 अपॉन 1 एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर. थर्ड वैल्यू रखेंगे आप तो आपको मिलेगा 2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये बन जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 4. एंड continuing in this fashion we can calculate Laplace transform of all the terms. Keep in mind all the terms are infinite. Now what is the Laplace transform of 1? We know that it is 1 upon s. This is a minus Laplace transform of t square is 2 factorial, that is 2 upon s cube. Okay, and the last one is 1 by 2 t raised this Laplace transform is how much? Plus 1 by 2 4 factorial upon s raised to 5 and so on. Okay, now this is the answer when we take term by term Laplace transform of this infinite series. Now whether this new series in terms of s is convergent or not, वैसे तो convergent होना चाहिए, but देखते हैं. तो सीरीज का कॉन्वर्जेंट हमको चेक करने के लिए रेशो टेस्ट लेना होगा.
और रेशियो टेस्ट में हम ले सकते हैं कि लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, मॉड ऑफ n प्लस वंथ टर्म इसकी जो भी आएगी, n प्लस वंथ टर्म मतलब क्या आएगी इसकी n प्लस वंथ टर्म, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म, व्हेन यू पुट n इक्वल टू 0 यू विल गेट, तो n प्लस वंथ टर्म का मतलब होता है पुट n इज इक्वल टू n यहां पर, तो वो आ जाएगा -1/n, मतलब यहां मैं लिखता हूं टर्म नंबर n प्लस वन डिवाइडेड बाय nth टर्म, ये टर्म है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज टर्म। और इसका आंसर जो है वो रेशियो टेस्ट के लिए हमको चाहिए जितना एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन इसका आंसर आप देखेंगे तो यहां की जो nth टर्म और n प्लस वन टर्म का रेशो लेंगे आप, तो वो रेशो आ जाएगा 2 टाइम्स 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर, we can give the mod, right? And here n is in the numerator and n tending to infinity, therefore your answer is infinity, and therefore ratio test जो भी होता है सीरीज का वो यहां पर फेल हो गया। इसका मतलब ये जो सीरीज हमको मिली वो कन्वर्जन नहीं है, और उसी का ओरिजिनल फंक्शन का आपने बोला कि वो एग्जिस्ट होता है, मतलब यहां ये मिसमैच हो रहा है। दैट्स व्हाई कीप इन माइंड कि ऑलवेज इन्फिनाइट सीरीज का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम 1 by 1 टर्म से नहीं ले सकते। गॉट दिस पॉइंट? ओके, देयर इज अ वन कंडीशन, बट वी आर नॉट considering that condition in this lecture. Okay, come to the point. Now what is the Laplace transform of hyperbolic sine? Laplace transform of hyperbolic sine, and variable I am considering 80. So now there are two ways to find the Laplace transform of this function. One is you can write the definition of hyperbolic sine, and that definition is e to the power this variable, मतलब 80, साइन है तो बीच में माइनस रहेगा, e to the power -80 divided by 2. If you use ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब वो कर्नल वाली जो 0 to इंफिनिटी इंटीग्रेशन लेना है, तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मैथमेटिक्स विल रिड्यूस आवर वर्क, तो ये काम हमको रिड्यूस करके देगा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट हाउ टू गेट द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सच फंक्शन। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप इसका आंसर बड़े ही तेजी से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन लेके भी आंसर आएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। देयरफॉर अब हम यहां उस रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। वैसे दोनों रास्ते सीधे हैं, स्ट्रेट है, बट इंटीग्रेशन वाला रास्ता थोड़ा सा महंगा साबित होगा हमारे लिए, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करने होंगे। नाउ आई एम यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सो यूज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये 1/2 जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाहर आएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 माइनस e⁻80। Now again use the linearity property. It is 1/2 Laplace transform of first term, all right, minus Laplace transform of second term. Reason क्या देंगे? Using linearity property. Now this is 1/2, and we know that how to get the Laplace transform of e⁻80. देखो बच्चों, यहां जो e⁻80 सिर्फ दिख रहा है ना, वो e⁻80 के बाजू में कुछ नहीं, मतलब यहां 1 होता है, इंटू 1 होता है, और यहां भी 1 है, मतलब 1 को ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसी भी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, क्या यूज करते हैं? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एक रास्ता है, रास्ता ये है कि 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाला जाए पहले, और उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में s इज रिप्लेस बाय s माइनस दिस कांस्टेंट एंड दैट इज a. सो द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन, क्योंकि 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s होता है, तो s को रिप्लेस करेंगे हम s माइनस ये मल्टीप्लायर जो है ना a, माइनस यहां भी 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1 बाय s होता है, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से यहां लिखेंगे हम s माइनस, और यहां का जो मल्टीप्लायर है t का वो है माइनस a, तो यहां लिखेंगे माइनस. ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन है. 1 बाय 2, दिस फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन s माइनस a, this is minus 1 upon minus minus become plus 1 plus a. Now just simplify. तो क्या करते हो, अब जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन पुट इन द डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा माइनस ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा. So the finally I am getting 1 by 2. नीचे जो है these are the factors. We can use the algebraic identity a square minus b square. We know that a square minus b square is a plus b, a minus b. In the same way, I am getting two factors. Therefore, its identity is s square minus a square. And here this minus will enter inside the bracket, तो ये minus s and this plus s get cancelled, this minus minus will become plus a, so this is a and a 2a, I'm getting 2a. फिर ये 2 and ये 2 cancel हो जाएगा and finally you are getting a upon s square minus a square. It is quite similar to the Laplace transform of sin 80. ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, वो भी ऐसा ही था, बस नीचे प्लस था, और हाइपरबोलिक साइन में नीचे माइनस आएगा. तो ये याद रखने के लिए भी आसान है कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन का जो भी आंसर आता है वही आंसर हाइपरबोलिक साइन का आएगा. ओनली चेंज इज चेंज द साइन इन द डिनोमिनेटर, है ना. तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि हाइपरबोलिक कॉस का भी आंसर क्या आएगा. तो मे बी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, prove that Laplace transform of hyperbolic cos 80 is equal to ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉस का क्या आता था, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये हाइपरबोलिक है तो यहां s स्क्वायर प्लस के जगह आप माइनस करोगे और ये ऐसा लिखो, तो ये आंसर आएगा. एंड इट इज ऑल्सो वी कैन प्रूव इजीली Laplace transform of hyperbolic cos 80. We know the definition of hyperbolic cos, that is, you know what is this, e raised to 80 plus e raised to minus 80 upon 2. Now I am using linearity property, that is 1 by 2 outside the operator, then Laplace transform of first term plus Laplace transform of second term. Fine. Give the reference of linearity property. Now it is equal to, again I am writing 1 by 2, and we know that here it is 1. So using shifting property, the Laplace transform of first term is 1 upon s minus a plus, the answer of this is 1 upon s minus minus a, that will become plus a. All right, just make the addition. 1 by 2, draw the line, denominator का multiplication, that is s minus a into s plus a, cross multiplication हो जाएगा,
like this, और ये इधर आ जाएगा. न्यूमरेटर में minus a plus a get cancelled and you are getting 1/2 times न्यूमरेटर में बचेगा 2s divided by, use again identity a minus b, a plus b, a square minus b square. So according to that, it is a square minus a square. Finally 2 get cancelled and you will get the answer s upon s square minus a square. So this is the Laplace transform of hyperbolic cos 80. So dear students, please keep remember these two formulae, and if I will revise you, we can find the Laplace transform of 1 t square, or in general t raised to n. Keep in mind, keep remember this formula. We can find Laplace transform of sine 80, cos 80. Then using the shifting theorem, we can find the Laplace transform of such a functions in which one of the multiplier is a exponential function e raised to 80. And finally, today we have seen how to find Laplace transform of hyperbolic sine function as well as hyperbolic cos function. So please remember all these formulae to solve different types of examples directly, right? So in the next lecture, we will see some other properties of Laplace transform which will be helpful to us to solve some critical examples. And then we will arrange some lecture in which we can use all the properties, all the formulae, and we will solve different types of examples. All right? तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Take care. Bye bye.